Hello student, good morning. Jai Sri Swaminarayan. Today we will study a poem When I Set Out for Lyonnesse. The writer, the poet is Thomas Hardy. A young apprentice architect. Apprentice means a person who is learning a trade. Trade means business. जो अभी कुछ अपना काम जो होता है वो सीख रहा होता है उसको कहते हैं apprentice. British poet and novelist Thomas Hardy. So this poet Thomas Hardy, who is British poet and novelist. Okay. So Thomas Hardy once visited a Paris to surprise the restoration. To supervise the restoration. Restoration means repair. A church. So once he went to Paris to repair as he had done a job as a supervisor and there was a restoration in that church. मतलब कि वो चर्च जो है वो रिपेयर हो रहा था उसमें उसका वो सुपरविजन कर रहे थे. On his return from the Paris, people noticed two things about him. So when he returned to his country, so people noticed about two things about him. A new glow in his eyes and a crumpled means crust so as to become creased. Okay, so a new glow in his eyes, एक आंखों में एक चमक देखी, and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. तो एक जो क्रॉस हुआ एक पेपर का टुकड़ा था जो उसकी पॉकेट पर वो हैंग कर रहा था, स्टिकिंग किया हुआ था, वो पेपर था जो लोगों ने नोटिस की. टू थिंग्स पीपल नोटिस. वन थिंग इज द ग्लो इन हिज आईज एंड द सेकंड इज द पेपर दैट वाज स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. ओके, दैट पेपर it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonnesse. So here, when poet returned from Paris, people noticed about him that there is a glow in his face and one of the paper which was crumpled and sticking out of his pocket. So when he returned from Paris, he was inspired by that visit, and as he inspired, he had written this beautiful poem. The name of poem is When I Set Out for Lyonnesse. Some of the vocabulary are there like spray. It means that leaves and branches of tree. Sojourn. It means stay. Dust. It means dead. Bechance. It means chance to happen. Radiance. Glow. Surmise. Guess. 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 Guess means सोचना उसके बारे में. Fathomless. So deep that the depth cannot be measured. So these are the important vocabulary. So the poet Thomas Hardy. The poet is a young architect who went to Lyonnesse to supervise the renovation work of dilapidated church. एक मतलब जर्जरित चर्च है उसका वो सुपरवाइज करने के लिए वहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है, वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ पर वो गए हैं. राइट. सो द पोएम कम्स फ्रॉम हार्डीज मेमोरी. उसकी मेमोरी में से ये पोएम आई है ऑफ 3 days ऑफ हिज लाइफ. वहाँ पर वो कुछ दिन तक रुकी थी, उसकी मेमोरीज में से उसने ये पोएम लिखी है और उसमें ये वो ऐसा बता रहे कि वो एक आर्किटेक्ट है. ओके, इन द फर्स्ट स्टांजा आई रीड अ स्टांजा फॉर यू. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonnesse 100 miles away. The place Lyonnesse, which is 100 miles away from his country, from his place, and rhyme. The word rhyme means frost. Okay, so it is indicating that it is winter season. Okay, so it was winter season and
that is why thus it is chilling, cold was everywhere. So in poetry, winter symbolize doom or sorrow or darkness. Hence, the poet seems to be hopeless. And the word, how can we know that the poet is hopeless? कुछ उदास है, इसमें एक वर्ड है लोनसमनेस. तो लोनसमनेस मीन्स अकेलापन. तो यहाँ पर indicating that the poet is hopeless. He feels lonely and the starlight जो चमकते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स, द लाइट ऑफ विच इज़ वेरी लेस, जो बहुत कम लाइट होती है, राइट, इज़ इन ओनली होप. तो कभी क्या होता है जब एकदम से बिजली होती है तो हमको आशाएं ज़्यादा होती है, राइट. बट ऐसा दिखाते कि स्टार लाइट है जो कम लाइट है, इट मीन्स दैट इट हैज़ ओनली लिटिल होप, या फिर बहुत ही कम इच्छा है उसकी, आशा है उसकी. अकॉर्डिंग टू हिम द ट्विंकलिंग स्टार इट्स टेक अवे हिज लोनसमनेस, उसका जो अकेलापन है वो ले रहे हैं. तो फर्स्ट स्टांजा में ऐसा दिखा रहे हैं द पोएट इज अलोन एंड द पोएट इज होपलेस, मतलब उसकी कोई मतलब वो इतने हैप्पी नहीं है, हैप्पी मूड नहीं है. सो नेक्स्ट stanza, what would be chance at lyonnesse when I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at lyonnesse while I should sojourn there? So poet says, what would be chance? Be chance means happened at lyonnesse while I should sojourn. Sojourn means stay there. कि क्या होगा अगर मैं वहाँ पर रहूँगा. No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. He feels that neither prophet can durst declare, nor the wisest which can guess, कि कोई वहाँ पर गेस नहीं कर सकता कि वहाँ पर वो क्या होगा. Again the first two lines of this stanza are repeated. What would be chance at lyonnesse while I should sojourn there? तो ये पहली दो लाइन जो है यहाँ पर रिपीट हुई है. सी द फर्स्ट स्टांजा, दो लाइन है वो लास्ट टू लाइन में, फर्स्ट स्टांजा में लास्ट टू लाइन वही है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेम है. सेकंड स्टांजा में भी यही है, फर्स्ट टू लाइन एंड लास्ट टू लाइन सेम है. तो यहाँ पर ये कहते हैं पोएट के क्या होगा, व्हाट विल हैपन, या फिर व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेसी, कि वहाँ पर क्या होगा अगर वो वहाँ पर रहेंगे. ओके, नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, मतलब कोई नहीं कह सकेगा वहाँ पर. नो तो प्रॉफिट मतलब पैगंबर, कोई पैगंबर भी नहीं कह सकेगा कि क्या होगा, और ना ही तो वाइजेस्ट विजर्ड या फिर कोई जादूगर है वो भी नहीं कह सकेगा कि वहाँ पर क्या होगा. द सेकेंड स्टांजा डिस्क्राइब द पोएट्स क्यूरियसिटी, किसी को नहीं पता क्या होगा. इट मीन्स दैट पोएट इज क्यूरियस हियर. So as he is curious, he is thinking that something great and memorable will happen at lyonnesse, कि कुछ ऐसा great और memorable ऐसा होने वाला है. तो यहाँ पर जो पोएट है वो थोड़ा क्यूरियस भी है. Let's see the third stanza. When I returned from lyonnesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from lyonnesse with magic in my eyes. So student, see in the third stanza, first two line and last two line are same. Okay, so in the third stanza the poet found that the radiance, पोएट फाइंड दैट द पीपल फाउंड द रेडियंस, उसके चेहरे पर एक, उसकी आंखों में ग्लो है, एंड दैट इज़ रेयर एंड फेदमलेस. फेदमलेस मीन्स जिसकी कोई बहुत इतना डीप है कि कोई उसका मेज़र भी नहीं कर पाता. तो उसके चेहरे पर जो ग्लो है, उसकी आंखों में जो ग्लो है, पीपल ने देखा कि उसकी आंखों में ग्लो है जिसको मेज़र नहीं कर पाते. दस द पोएट सीम्स टू हैव अचीव्ड समथिंग विच ही वॉज क्वेस्टिंग फॉर, कि कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है जिसका वो डिज़र्व करते थे या फिर वो एक्सपेक्ट करते थे. His hope is fulfilled. अब थर्ड स्टांजा में क्या है, पोएट की जो होप थी वो फुलफिल हो गई है. फर्स्ट स्टांजा में क्या है, वो होपलेस है, बट थर्ड स्टांजा इंडिकेटिंग कि वो होपफुल है. ही हैज़ गोटन समथिंग दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिम, ऐसा कुछ उसके जीवन में जो होता है जो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. इट वॉज ईमा, हिज
सोन टू बी वाइफ, के यहाँ पर एक पोएट जो है वो शादी करने वाले है, उसकी वाइफ का नाम जो होगा फ्यूचर में, वहाँ पर फ्यूचर बताते हैं कि ईमा जो है उसकी वाइफ का नाम है. Again, the poet repeats the first two lines of this stanza. According to him, all this happened when he returned back from Lyonnesse with magic in his eyes. तो जब फर्स्ट स्टांजा में होपलेस है, सेकंड स्टांजा में क्यूरियस है, और थर्ड स्टांजा में जो पोएट है वो होपफुल है. तो फाइनली there is a glow and radiance in his eyes which is fathomless, which cannot be measured, and here the poet is hopeful, and वो खुश है, हैप्पी है कि कुछ उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, उसका जीवन जो है एक बदलाव उसके जीवन में. स्टूडेंट, इफ वी सी द राइमी स्कीम ऑफ द पोएम, तो लेट्स सी द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम. लियोनेसी अवे, स्प्रे, लोनसमनेस, लियोनेसी अवे. So the rhyming scheme is A B B A A B. In second stanza, Lyonnesse there, declare guess, Lyonnesse there. So A C C A A C. In the last stanza, Lyonnesse eyes, surmise, fathomless, Lyonnesse eyes. So the last stanza rhyming scheme is A D D A A D. Now student, whatever the poem that I have explained to you, you have to write द समरी ऑफ द पोएम. ओके, आपने ये पोएम में क्या समझा उसके बारे में आपको जो है 8 to 10 लाइन्स में ये पूरी समरी लिखनी है. राइट, 8 to 10 लाइन्स समरी पता है कि आपने ये पोएम में क्या समझा है. सो द होमवर्क ऑफ दिस पोएम इज समरी ऑफ द पोएम इन 8 to 10 लाइन्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.